IIT में पहले साल ही गए और दैट वाज द बूम ईयर. सो आई एंटर्ड इन 2000, राइट. एवरीथिंग वाज वेरी रोजी. अगले साल क्रैश किया, बट जब हम पहुंचे सब कुछ रोजी था, सबकी नौकरी लग रही थी, जिसको जहाँ जाना था पहुंच रहा था. तो शुरू में किसी सीनियर ने फंडा दिया कि यार ज़्यादा नंबर बनाने का फ़ायदा नहीं है. द कंपनीज डोंट टेक यू बिकॉज दे थिंक कि तुम सीरियस नहीं हो, तुम तो PhD करने जाओगे. मेरा एक ही कॉल आया था विच वॉज ओनली IIM बैंगलोर बिकॉज आई वॉज नॉट 99 और समथिंग बेसिकली जो भी था. तो आई जस्ट गॉट वन कॉल. तो जब तक वेट लिस्ट में था सीनियर्स वर वेरी पोलाइट, कह रहा हाँ जो मन है करो, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है, नौकरी भी अच्छी है, इससे ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, ये है वो है. फिर एक दिन IIM बैंगलोर का कन्वर्जन लेटर आ गया कि भाई आपका हो गया है, यू कैन ज्वाइन, जो भी वेट लिस्ट कन्वर्ट हो गई है. देन आई कॉल्ड अप द सेम सीनियर्स एंड आई एम लाइक आ तो गया है पर मेरा अभी भी जॉब जाना. दे आर लाइक सब बंद कर, आई एम चला जा चुप करके. नोबडी एवर गॉट अ वाइब दैट लीमन विल नॉट ओपन अप ऑन मंडे. संडे को वो न्यूज़ आई है, मंडे को हम काम पे गए हैं एंड इट वाज मस्ट हैव हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री कि मैं तो अपने बॉस को ही CV दे रहा था. मैं कहा सर ये ठीक लग रहा है. Welcome guys to Conversations Cafe. We are in Dubai. Conversations Cafe is a show that brings ordinary Indians to you who've done extraordinary work. They are people just like you and me. They just strive for more. They worked harder. And most importantly, they made the right career choices. The one question that we ask everybody at All to by InsideIIM is this. Do you invest in yourself enough? Our third guest for today, I mean, he also has, great brands on his resume, but he's carved out his own path despite the fact that, he went to IIT, went to IIM, worked in one of the biggest investment banks. That I think is truly commendable. Been in the UK and in the UAE for the last 15 odd years, somebody who comes from Jalandhar in Punjab originally. So I'd like you guys to give a big round of applause to our next speaker, Amit Gupta. Thank you. Awesome. Welcome, Amit. Thank you so much for doing this with us. A great pleasure to finally meet you in person. So, Amit, ये बताओ, you wanted to start an import-export business of your own. What was this import-export business fascination and how did that happen? So I think life in small town, it's very different to what you see in metro, right? In Punjab, in Jalandhar, everybody is a businessman, right? So I'm the only black sheep in the family. My entire family is full of doctors. And so my father, I've always seen him running his own hospital, right? My best friends, they own either shops or factories. So everybody that I knew growing up does their own thing. मतलब जैसे जलंधर में कॉर्पोरेट नौकरी नहीं है, मतलब आप समझ वहाँ पे 2 से 5 लाख रुपया महीना किसी को कोई और के लिए काम करने के लिए नहीं दे रहा. तो इफ जलंधर में इफ यू आर डूइंग वेल, 95% ऑफ द टाइम्स यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ. सो ग्रोइंग अप वैसे ही रोल मॉडल्स थे. एंड ग्रोइंग अप मुझे भी होता था यार बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैक्ट्री लाएंगे, घर पे बैठेंगे, फैक्ट्री चलेगी, काम करेंगे. नाउ इन हाइंडसाइट आई नो हाउ डिफिकल्ट दैट इज. डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ब्यूरोक्रेसी एंड देन डील विद इंटरनेशनल पेमेंट्स. बट ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, कौन सा प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचा था? वो नहीं, बस हमें फैक्ट्री लगानी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए था बस, और कुछ नहीं करना था. But when did the kid of IIT and stuff, like I'm sure you would have known early on that you are a bright kid, right? Or 10th standard was a sudden revelation? हाँ, जलंधर में नंबर अच्छा आ रहा तो यू वर अ ब्राइट किड बेसिकली बिकॉज एवरीबडी नोज एवरीबडी. तो उसमें द रियलिटी हिट्स व्हेन यू एक्चुअली गेट टू दिल्ली. बट या आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट IIT एक्चुअली. सो फनी, माय होल कैरियर हैज बीन लाइक दिस. इट्स नॉट ऑल माय वेल लेड आउट प्लान्स हैव नेवर वर्कड. सो इन माय फाइनल ईयर इन IIT आई डिसाइडेड ओनली वन थिंग कि IIM नहीं करूँगा, 2-3 साल नौकरी करूँगा और उसके बाद फॉरेन MBA करूँगा. And I ended up going to IIM Bangalore straight after IIT, right? Okay, so who told you about IIT if you didn't know about IIT? My father figured out because we had very little exposure to the non-medical side. My father figured out कि भाई अगर आपको engineering करनी है तो then you need to go to Chandigarh, go to those tuitions for 2 years and then there is some college called IIT which is good, आप वहाँ जाओ. मैं कहा ठीक है. हमने कहा मेडिकल तो नहीं लेना तो non-medical जाएंगे. Then I went to Chandigarh. I literally had no clue about IIT
till even I entered. Obviously, at IIT, there would be really smart people who would be there with you. It was easy for you to kind of ensure that you were in the mix, or did you just give up on academics after that completely once you got admission? IIT में पहले साल ही गए और that was the boom year. So I entered in 2000, right? Everything was very rosy. अगले साल क्रैश किया, बट जब हम पहुंचे सब कुछ रोजी था, सबकी नौकरी लग रही थी, जिसको जहाँ जाना था पहुंच रहा था. तो शुरू में किसी सीनियर ने फंडा दिया कि यार ज़्यादा नंबर बनाने का फ़ायदा नहीं है. द कंपनीज डोंट टेक यू बिकॉज दे थिंक कि तुम सीरियस नहीं हो, तुम तो PhD करने जाओगे. नहीं यार, ये तो बढ़िया स्कीम है. बढ़िया, क्या है पढ़ने की जरूरत है. तो हाँ, देवर ब्राइट किड्स, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज ब्राइट किड्स, क्योंकि वो पढ़ते थे, फिर हमें पढ़ाते थे और हम पास हो जाते थे. तो IIT वॉज ऑल अबाउट जस्ट गेटिंग थ्रू एकेडमिकली, कि भाई इतने नंबर आ जाएं कि पास हो जाएं, कि घर पे फ़ोन ना जाए, या घर पे ये ना हो कि आपका बच्चा फेल हो गया है. एंड रेस्ट अगेन, IIT वॉज अ ब्रीज फॉर मी बिकॉज आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम studying there, deeply involved with sports, played all the inter-IITs, deeply involved with the dramatics function. I was the sports GSEC, organized festivals. मतलब वहाँ पे आई थिंक पढ़ाई करनी मुश्किल थी, बाकी सबके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ईजी थी, तो यू कुड डू एनीथिंग दैट यू वांटेड. सो IIT इन दैट ईयर्स आई वाज देयर फॉर 5 years, क्योंकि मेरा कोर्स 5 साल का था. एंड बट इट वाज अ ब्रीज. आई जस्ट लव्ड एवरी बिट ऑफ द टाइम स्पेंट इन IIT बेसिकली. And in terms of, you said you became sports GSEC, were you organizing things? Were you participating in sports? What exactly was that time like? Yeah, so IIT, first day in IIT, I was really scared. I thought ये बहुत ही मग्गू कैंपस होगा, and like everybody studying all the time. यहाँ पे तुम क्या ही करोगे. तो पहले दिन कोई सीनियर आया, कह रहा तुम कुछ खेलते हो. मैंने कहा इसको मतलब क्या इंटरेस्ट है. तो मैंने कहा हाँ सर, मैं बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल काफ़ी गेम खेलता हूँ, स्कूल के लिए खेलता था. तो कहता अच्छा, फिर अभी आपके ना इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होंगे. मैं तो आंखें खोल, मैं आई वाज जस्ट शॉक. मैं कैसी बातें कर रहे हो. मैं कहा आर यू सीरियस, मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, एंड दे हैव अ प्रॉपर, लाइक वी हैव अ प्रॉपर GC. एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि दैट इज द कोर थिंग. सो वी हैव इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फॉर स्पोर्ट. हर चीज़ का कॉम्पिटिशन है, क्योंकि अगेन एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम स्टडिंग बेसिकली. लोगों को टाइम पास करना है, बढ़िया. तो that was the whole thing, and I did pretty much all the sports all the time. But it was like IIT was great fun. I think it was just, and I think I hope it still is basically, because there is just so much to do apart from studies, and I think that is what really built a lot of us basically. What was the best thing that happened to you at IIT? What is it that you find most memorable? I think friends we made. It's like 5 saal, they are still the best relationships that I've built. As you go up in your career, you will need these friends, for emotional support, sometimes for financial support. But the biggest thing they will bring to you is mentorship. So some of my friends have literally saved my ass on few of the jobs. I would have gotten fired 2 or 3 times if it was not for the right advice, right? और वो जैसे होता है ना कि दोस्तों के साथ कि भाई बड़ा कोई सीनियर जितना मर्जी समझा रहा है, नहीं समझ आता. जब दोस्त गाली दे के समझाता है कि भाई यही बात है, समझ जा इसको, तो तुम्हें थोड़ा जल्दी समझ आता है, राइट? तो इफ़ यू हैव सर्टन फ्रेंड्स who are slightly ahead of the curve of you, maybe I was very lucky to have a guy who was already a manager by the time I started working. So it was great to lean on him. He told me on day one, the boss is God for a reason. As IITians, when we go inside ना, हमें day one पे लगता है कि यार हमें boss बना दो basically. हमें सब कुछ तो आता है, because we have very narrow vision, we don't have exposure, we've never bothered to really know कि business कैसे चलता है. But that doesn't work out. So then it's really important to know कि भाई no, there are certain lines as a corporate employee you cannot cross just because the structure has been set up like that. I think that those are the best relationships. If you have relationships with people who are ready to tell you the truth, right? This is the most important learning, because things will change. I think work environments will change, and over time how to succeed in a particular career will change. But the beauty is somebody has done it, right? So, and if you know the guy, he's just a phone call away, and he will say, okay, this is the best way to do it. And I found that I was actually receptive to those guys than to people who were probably 20-30 years seniors. It's sometimes not easy to take feedback from somebody you feel that doesn't know where you're coming from. So if you were so clear about not going to IIM, did you work at all after IIT? No. So then why did you go to IIM? तो IIT में मेरा मन था कि भाई कंसल्टिंग करेंगे और वैसे जाएंगे. अब IIT में इतना कुछ कर रहे थे तो CG तो बनी नहीं, तो कंसल्टिंग की तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई. तो देन IIM was an option. I got a few other jobs from campus. IIM मैंने लिखा, IIM बैंगलोर में I got a call, and तब मैंने काफ़ी मैं सीनियर से काफ़ी रिलाई करता था एडवाइस के लिए. तो IIM बैंगलोर वगैरह का कॉल आया, मेरा एक ही कॉल आया था, which was only IIM बैंगलोर, because
I was not 99 or something basically. जो भी था, तो I just got one call. I gave the interview and I was on wait list. Like 100-150 wait list थी, decent number on the wait list. And I called up my seniors. I'm like, you know, I have these two options as jobs, and this IIM Bangalore thing might happen. But मेरा इतना मन नहीं है IIM जाने का. I'm still thinking कि जॉब करते हैं ये वो. तो जब तक वेट लिस्ट में था, सीनियर तो वेरी पोलाइट कह रहा, हाँ जो मन है करो, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है, नौकरी भी अच्छी है, इससे ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, ये है वो है. फिर एक दिन IIM बैंगलोर का कन्वर्जन लेटर आ गया कि भाई आपका हो गया है, यू कैन ज्वाइन, जो भी वेट लिस्ट कन्वर्ट हो गई है. देन आई कॉल्ड अप द सेम सीनियर्स एंड आई एम लाइक, यू नो, आ तो गया है पर मेरा अभी भी जॉब जाना. दे आर लाइक, सब बंद कर, IIM चला जा चुप करके. And they were right. It's like the opportunities that IIM opened for me, I think it was all about opportunities. I don't think if I would have gone the career path that I wanted to go at that with the jobs I had in my hand in that point, there is no way I would have opened those sort of opportunities in such a short span of time. So yeah, again, it's just, you know, it happened and I thought, yeah, let's go. Sure. So clearly, whatever you plan doesn't happen. So at IIM, what did you do? Did you study at IIM or? नहीं, तो IIT में जो गलतियाँ की थी वो तो सुधारनी थी. तो IIT के बाद आई वाज श्योर कि भाई CG जरूर बनानी है इस बार, वो गलती नहीं कर सकते. पहले 2-3 टर्म इट्स लाइक आई रियली क्रैक्ड इट. मतलब आई वाज वन ऑफ दोज जिनको मैं मग्गू कहता था. आई वाज द मग्गू किड. I was still involved with all the activities because that came easy to me, but it was this time the focus was I was attending all classes, I was active, class participation के भी नंबर थे तो मैं वहाँ पे भी था. So first 2, I think 3 semesters I did really well in terms of acads also. फिर shortlist आ गई, IPO, मतलब I got placed with Lehman, उनका PPO आ गया. PPO came before the 3rd semester. So my first year grade point was 3.6 and second year was 2.8. I think ज्ञान बहुत मिलता है, CG एक नहीं है, but all things equal CG चाहिए, right? Because it's I'm on the other side, we look at people, we looking people to hire. CG helps. It's just a good way of an indicator that, you know, this person can work hard. That's it. Was there any specific direction के markets में मजा आता है? Was it something that happened to you or you were very clear कि नहीं मुझे ये चमकता है और मेरे को ये करना है? नहीं, मुझे मार्केट्स ही करना था. आई थिंक मेरे को सीनियर्स के साथ बात करके इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि M&A के लॉन्ग आवर्स नहीं होंगे हमसे. मार्केट्स की ब्यूटी ये थी कि वीकेंड अपना है. फ्राइडे दुकान बंद, मार्केट बंद, फिर मंडे सुबह ही खुलेगी. तो लाइक आई थिंक इन माई होल कैरियर आई प्रॉब्ली वर्कड 1 वीकेंड. वो भी मैं तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए चला गया था, बॉस ने नहीं बुलाया था. तो मार्केट्स में ये अच्छी बात थी कि बस वीकेंड आपका है, जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है. M&A की हॉरर स्टोरीज जीजी ने सुनाई, हमने भी सुनी हुई थी. Okay, this is a great opportunity for me because we've spoken about the global financial crisis at least about 11 to 12 times at Conversations Cafe with different speakers, you know, how it has affected their life. But I've never met anybody who actually worked at Lehman Brothers when the company went bust. So I am also very curious to know, Amit, कि exactly हो क्या रहा था वहाँ पे at that point of time. So what exactly happened at that moment and did you see it coming or was it a shock or it didn't matter to you? आई थिंक जिनसे तुम कहानी सुन चुके हो उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि हमारे तो मंडे को उन्होंने टर्मिनल बंद कर दिया था. तो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु स्टिल कंप्लेन अबाउट दैट बिकॉज दे हैड वेरी लाइक आई थिंक दे लाइक गौतम दे हैड प्रॉब्ली 30 days ऑफ इवन द मार्केट्स गाय वाज कॉल्ड ओवर द वीकेंड बिकॉज दे हैड टू टैली द एक्सपोजर टू लीमन. हमारा बहुत सिंपल था. फ्राइडे तक एवरीबडी वाज कॉन्फिडेंट कि लीमन को कोई डूबने नहीं दे सकता. इट्स एन एक्सीलेंट कंपनी, इट्स डूइंग वेल, इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग, दे आर सेविंग एवरीबडी, दे सेव बेयर टर्न्स, दे ऑब्वियसली गोइंग टू सेव लीमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा. फ्राइडे वी वेंट होम. देयर वाज सम स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑब्वियसली, लाइक यू नो दे वर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट कि कैपिटल कैसे आउटफ्लो हो रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं कैपिटल ज़्यादा तो नहीं जा रहा है बाहर. सो देयर वर सम थिंग्स बट आई डोंट थिंक एनीबडी ऑन, और मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में था तो लाइक ऑब्वियसली आई डिडंट सी द बिग पिक्चर, बट इट डिड नोबडी एवर गॉट अ वाइब दैट लीमन विल नॉट ओपन अप ऑन मंडे. संडे को वो न्यूज़ आई है, मंडे को हम काम पे गए हैं. And it was must have happened for the first time in the corporate history कि मैं तो अपने बॉस को ही CV दे रहा था. मैं कहा सर ये ठीक लग रहा है. But did you at any point of time feel that you were challenged now suddenly? यार अभी नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, नए देश में हो, मतलब all said and done you are there is no security, you are still in your first year, right? ऐसा तो नहीं है कि you can just go back home and your dad runs a hospital, does not run a doesn't even run a shop essentially, right? So what exactly was going through your mind or were you very confident कि नहीं ठीक है मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा? Again in hindsight what happened was, एक तो लीमन का ब्रांड नेम बहुत अच्छा था स्ट्रीट के ऊपर, राइट?
So everybody thought कि there is great talent here. So anybody जिनकी भी वो थी, मतलब anybody who was hiring had actually stopped hiring to look out for Lehman talent. Even I was interviewing with some consulting companies, and one of the partners at the consulting companies gave me feedback that, you know, we really like you, but we think, you know, finance is your passion basically. And I'm like, sir, globe kam to naukri de do yaar, naukri nahi. But no, I think he had a point. I think I think enjoyed what I did, and over time I went to a lot of interviews. I think again the bosses were very helpful. They were putting in a good word. They were kind of letting me interview, like kind of putting a word that, you know, this is a good kid. But again, I had only 1 year experience, so I could not tell them that, you know, I've run the show and I know everything. So 1 year guy is pretty much like a fresher that, you know, he's going to be on the cost center, so dekh ke le lo jab bhi hai. So at that point in time, we got lucky that we were the first ones to drop, and there were still bids in the market. But after that, like the subsequent layoffs that happened, because it didn't stop there, I think those colleagues and those people really found it more difficult to do the job search basically. I know a lot of people are trading, and it's great. I think India, we are seeing a lot of talent coming out of India, and there are a lot of shops in India, and like everybody's very well, you know, everybody seems to be doing options also, which is like kind of a even more leveraged product, and a lot of people are doing good also. I'm sure some of the other guys are struggling. I think advice वही है जो हमारा था कि यार don't lose beyond a certain money. That's it. And don't keep that stop loss to yourself. बीवी को दे दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, दोस्त को दे दो कि भाई send them the statements every day. The day you are down a certain amount which is beyond your initial investment, ये जो तुमने सोचा था, क्योंकि everybody gets married to your position, right? कि भाई तुम्हें लगता है कि बस ये अब वापस आएगा, अब वापस आएगा, अब वापस आएगा, and some days it doesn't come out basically, right? And that is the time you want to put a stop loss there.